Hello, good people. This video is being recorded prior to CAT. अभी तक all your attempt would be done, or you would have seen बहुत सारे videos, बहुत सारे reactions. अपना कुछ होगा, जैसा भी होगा. The only advice I can give you on that issue is सीधा सीधा अगले मुद्दे पे चलो. अब next exam, the next thing that you have to focus on are the next exams, primary among them being MyCat and SNAP and ZAT. And this video is about that exam ka specific section, the DM section. Let's go through it in detail. The ZAT test structure. Historically, ZAT has never released the test structure, but this time on their website, उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया. There are three sections. Part 1 has 175 minutes, about 26 questions, about 22 questions, about 26 questions in the VA and LR section, and about 22 questions in the decision making section, and about 28 questions in the QA and DI section. It is a fun paper. Nobody ever walks out of the ZAT paper claiming कि time कम था. Time is more than enough. Yet सारे सवाल करना is always a challenge because अलग level का, as in the way they test things is very very different to your usual CAT वाला कहानी. At least, especially when it comes to the decision making section. The marking scheme is +1 for each correct answer, minus 0.25 for each incorrect answer. And they have this additional, as in progressive, or they want people to, as in, they are sideways encouraging people to take guesses by claiming कि अगर unattempted question तुम्हारा 8 के ऊपर चला गया across the entire test in this first section में, if your number of unattempted question after 8 unattempted questions, you start getting minus 0.1. The layman interpretation of this is that wants you to attempt more. The more nuanced understanding of this is mat karna faltu ka attempt, because even if you get minus 0.1, it is much better than getting minus 0.25. The fact that you are not attempting means that most likely you are not going to get the answer right, even if you did randomly end up attempting some option. So minus 0.1 is much better than minus 0.25. Please only attempt those things that you're good at. Now, this is the part 1 of the exam. In part 2, the first 5 minutes are spent in mock keyboard testing. You're given some sentence like the quick brown fox jumps over the lazy dog. One of those sentences that contains every letter of the English alphabet. There are also symbols included. So all your typing experience is taken care of. This typing bit has only restarted last year, because for the prior 3-4 years it was not there, but now it is there. You have to write an essay of sorts. Then part 3, it is a 30-minute section within which you will have 25 GK questions with no negative marking at all. So you should run with it and attempt every question within this. Whatever you get right is a bonus. And then there is an analytical essay writing task. Herein, you will be given 3 topics, and among these 3 topics, you have to identify one and answer them. Write an essay on it of about 250 words. Yes, about 250 words. This essay bit is only considered if you are shortlisted for XLRI. If you are not shortlisted for XLRI, this essay is of no consequence to you. So, given that everyone is going to appear for the test with the expectation that XLRI, the primary institute under this test, is where you get shortlisted, everyone will write it. But if at all you feel like यहाँ पे दुनिया खराब हो गई, तो इसमें chill भी करोगे तो चलेगा. Okay, this is all about the test. What is the structure? क्या चाहिए होता है? Now, within this test, clearly the new thing that we have to worry about, or you would have to study, is the decision making section. Now, decision making section के बारे में I can only give you this advice and everything. Questions are based on personal organizational decision making in real world situations. मतलब you are a representative of a company and आपने किसी गांव के वर्कर्स के साथ डील कर ली to source the locally made handicrafts. फिर वो मतलब 10 साल की डील थी, लेकिन 2 साल के बाद देर से ही नहीं, हम दूसरी जगह भी बेचना चाहते हैं. And then how do you convince them to stick to their contract? Do you offer them extra money so that they stick to the original contract, or do you threaten legal action? Yeah, whatever. Real world situations are given, and then a managerial mindset is sought.
इट इज अ बेन एंड अ बून. बेन इसलिए क्योंकि given that this section only exists in ZAT एंड डीएम का किसी ने ज्यादा रिसर्च किया नहीं है दुनिया में, तो होता क्या है कि देर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स एंड stupid ideas floating about DM, which is what makes it a pain. It is a boon. If at all in cat you hated the DILR section, DILR section of cat is a different beast altogether. उसकी लड़ाई करने में बड़ा ही मजा आता है. But in case you are not good at number crunching in, as in those hypothetical mathematical processing situations are not great for you, decision making is a section that will potentially save you. Additionally, given the fact that nobody really practices decision making all throughout the year, everyone starts off at the same level right now. तो यहाँ पे आप खींच के आगे बढ़ सकते हैं. अब यहाँ पे एक और फन चीज है कि भाई वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ मॉक्स फॉर कैट, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ मॉक्स इन एंटिसिपेशन ऑफ द टेस्ट. सो अब जब जैट का सीजन चालू होगा ना, अ लॉट ऑफ पीपल, टीचर्स एंड फॉर्मर स्टूडेंट्स अलाइक विल एडवाइस यू, पहले ना एक दो जैट का मॉक देख लो, पता चल जाएगा डीएम का सेक्शन क्या है. मत करना, माई ओन पर्सनल एडवाइस इज डू नॉट डू दैट. बिकॉज फर्स्ट यू शुड बी ए, पहले थोड़ा पढ़ना डीएम के अंदर क्या है. एज इन टेस्टिंग फॉर्म में डीएम मत करना चालू करना, क्वेश्चन तो देखने चाहिए लेकिन टेस्टिंग फॉर्म में नहीं. डू इट इन अ वे दैट यू आर लर्निंग अबाउट अ टॉपिक. यू डिड नॉट स्टार्ट ऑफ योर कैट प्रेप बाय टेकिंग अ कैट मॉक, और द मोस्ट स्मार्ट पीपल वुड नॉट डू दैट. पहले देखेंगे क्या आता है उसके अंदर, उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे, फिर टेस्टिंग करने जाते हैं. डीएम ऑन द फेस ऑफ इट, इफ यू ट्राई टू रश थ्रू इट, तो फिर बहुत मुश्किल रहेगी. यू विल गेट अ लॉट ऑफ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स, रॉन्ग फ्रेमवर्क्स क्रिएटेड. बट इफ यू गिव योरसेल्फ टाइम फॉर, अच्छा दिस इज द एट्रीब्यूट दैट ज़ैट वांट्स अस टू फोकस ऑन, बिकॉज दैट इज द ओनली सोर्स फॉर अस फॉर लर्निंग. तो धीरे धीरे करके उसके अंदर बहुत सीखने को मिलेगा. इट विल रिक्वायर सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टेक अवे द लर्निंग्स related to decision making section. Give yourself that time. The other thing I want to focus on is, देखो डिसीजन मेकिंग के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है. इफ एट ऑल यू आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समवेयर फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ना इंश्योर करना यू आर दी ओनली, मतलब एक ही जगह से गाइडेंस लो. थोड़ा सा एक्स की बात सुनी, फिर थोड़ा सा वाई की बात सुनी, फिर थोड़ा सा जेड की बात सुनी, फिर थोड़ा सा ए की बात सुनी. इससे होता क्या है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रीजनिंग सेटअप्स. there is no perfect way to arrive at a DM answer. There are general guidelines, there are general principles that you have to follow, but ऐसा कोई perfect way exist नहीं करता है. पंगा क्या रहता है, if you listen to five different people, they will have their own five different ways. Now when you get to solving questions, you're going to muddle up everything. Instead of one thing working for you, you're going to end up confusing yourself even more, and then you will hear the common refrain, डीएम तो लक बेस्ड है, कुछ भी सही हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है. यस, फॉर एन इंडिविजुअल, एट एन इंडिविजुअल क्वेश्चन लेवल यू कैन नेवर गारंटी सक्सेस, बट इफ यू आर फॉलोइंग अ reasonable understanding of what is required in DM over a long list of questions, it is more than likely that you will clear the cutoff mark. And the last line, beware of people who claim they are experts in the decision making section. बहुत तेज, बहुत अकलमंद, बहुत ही टॉप वाले लोग, जब when people start saying ना कि मेरे को डीएम आता है, that should set your alarm bells ringing, क्योंकि किसी को डीएम आता नहीं है. Everyone is still figuring out decision making वाले सेक्शन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है. It does not have a very huge market size, it does not have a very huge timeline, तो कोई इसको उतना ध्यान देता भी नहीं है साल भर में, myself included. बट इनफैक्ट हमने जैट 2017 से पहले, हमने 2017 के पहले तो जिंदगी में जैट दिया नहीं था. आई हैव गिवन माय ओन परसेंटाइल्स इन द टेबल एट द बॉटम. 2017 में हमने जैट दिया था, एंड एट दैट टाइम जब हम जैट देने जा रहे थे, तो उससे पहले हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था. तो इट वाज स्टेटेड एज इफ, it was stated that DM is very much like reading comprehension and critical reasoning, उस हिसाब से चल जाता है. विद दैट माइंडसेट हमने दिया था. 2017 में टैलेंट आ गया और मस्त एकदम 79% है. थैंकफुली उस साल डीएम का सेक्शनल कट ऑफ वाज 73 एंड एवरीथिंग, तो हम कट ऑफ तो पार कर रहे थे, बट देन 79% थोड़ा रैंकल करता है कि भाई इतना कम कैसे रह गया. फिर अगले साल हमने बैठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई करी. देन आई रियलाइज्ड there are the myths and the weird understandings that float in the market, how useless they are. अगले साल ठीक ठाक आ गया. Despite my score going up, I was fairly certain I have not mastered DM so much as
The principles that I have identified are working well. It may not necessarily work well in future in entirety, but over an extended period of time, I can create a base that will ensure that in any exam हम ज़्यादा बर्बादी ना करें. Next year I got 99.849. Next year that 2020 I got 94.928. In 2022 फिर से वापस I went back to earth 82.7849. और ये 82.7849 मतलब there were things that I learned in this paper that I had not learned earlier. After the test, post-test analysis, mein, I identified, okay, this is what the ZAT authorities want us to think of. If I can recall a specific example, एक बहुत प्यारी चीज थी. There were some two groups of students जिसमें से both these groups had one person जिन्होंने आपस में assignment में cheating वीटिंग कर ली थी. And then the questions hinged on पूरे ग्रुप को सजा मिलनी चाहिए कि सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को मिलनी चाहिए जिन्होंने वो चीटिंग और कॉपीइंग का काम किया था. सो इन माय अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ वो इंडिविजुअल्स को सजा दे रहे थे, बट देन जैट की आंसर की के हिसाब से पूरे पूरे ग्रुप को सजा मिलनी चाहिए थी. सो दैट वाज अ लर्निंग पॉइंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन मेकिंग ग्रुप अकाउंटेबिलिटी इज अ फैक्टर दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. नंबर तो मेरे खराब आ गए. थैंकफुली इनफ इस साल भी कुछ 79 की परसेंटाइल कट ऑफ थी फॉर द बीएम कोर्स, जहाँ पे डीएम की कट ऑफ ज्यादा रहती है. सो यहाँ पे भी मेरा परसेंटाइल कट ऑफ क्लियर यहाँ पे भी हो गया, परसेंटाइल कट ऑफ क्लियर यहाँ पे भी हो गया. लास्ट वाले ये तो लास्ट ईयर का ही है. अगेन लास्ट ईयर में तो हम देर वॉज प्रोजेक्ट कोडा, तो हमने डीएम पढ़ाया था, ज्यादा टाइम भी दिया था. इट वॉज हाईली लाइकली कि हम उसके ऊपर ठीक कर लेंगे. ये पूरी परसेंटाइल दिखाने का पर्पस स्पेशली 2017 एंड 2022 की स्कोर्स, 2021 में हमने दिया नहीं था, वो कोविड ईयर था तो अब एग्जाम देने जा नहीं रहे थे उस साल. तो ये सारी परसेंटाइल के बताने का यही कारण है, जस्ट टू टेल यू, डिस्पाइट हैविंग obtained decent enough percentiles, I am definitely not an expert. I am definitely not somebody जो तुम्हें अथॉरिटी के साथ बता सकता ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा. But I'm still far more confident in my ability to get across the logic and reasoning for why something works versus why मतलब ये आंसर होना चाहिए. A lot of what happens in the DM market, especially मतलब क्या बताएं, कैट की खत्म होने के बाद डीएम पढ़ाने वाले यूजुअली बैकवर्ड रीजनिंग से काम कर रहे होते हैं. अगर तुम्हें पता है ऑप्शन आंसर बी है, तो बी से चालू मतलब दिल कम अप विद रीजंस टू जस्टिफाई बी, विच इज अ वेरी फ्यूटाइल वे ऑफ स्टडिंग डीएम. एंड मतलब ये तो मेरे को पर्सनल दुख भी रहा है क्योंकि हमने खुद से पढ़ाई करी थी जब हम अपना ही एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग डीएम इन 2017-18, जिस जमाने में हम इनिशियल अटेम्प्ट्स ऑफ दैट खेल रहे थे. उस टाइम में देयर इज लॉट्स ऑफ नॉनसेंस एंड गार्बेज दैट गोज अराउंड. एटलीस्ट आई ट्राई टू कीप इट अवे, बट ठीक है. डिसीजन मेकिंग सेक्शन के बारे में, इट इज एन एब्सोल्युटली फन सेक्शन. एनीवन हु एवर टेल्स यू कि भाई इसके अंदर एस नहीं किया जा सकता, इसके अंदर यू कैन नॉट डू वेल, एकदम किस्मत की बात है. इट इज मोर एन इंडिकेशन ऑफ देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट इज एक्ट इज टेस्टिंग देन द फैक्ट दैट द डीएम सेक्शन इज अनरिलायबल. ओके, सो यही डीएम सेक्शन का. I'm giving you the caveat. I'm not an expert. I'm not the smartest person in the world. Yet I am teaching DM within this project CODA. CODA as a word means the final supplement or the final support for you to arrive at your destination. So the class schedule is here. There are going to be two theory lectures related to DM. In these two theory lectures, what I am going to cover is going to be the general principles, the list of general principles that I've identified. After that, we are going to discuss the ZAC 2019 DM section 2020 last 5 years का जो भी DM का section रहा है. Every question, every set, we'll get to each set over and over and over and over and over again. Our class structure is usual Zoom meeting where you can unmute, you can talk. In fact, it is encouraged. जैट का डिस्कशन करने में तो अच्छा ही रहता है कि भाई एज इन डीएम का डिस्कशन में अच्छा रहता है अगर टू एंड फ्रो बात चले, क्योंकि चैट में इन द टेक्सचुअल फॉर्मेट getting an idea across becomes progressively more difficult. Then we'll have 8 sectional tests which will get released from 10th to 17th. They will only get released from 10th to 17th because पहले के थ्योरी लेक्चर, उसके बाद 3 पुराने जैट के पेपर का डिस्कशन करने के बाद you're going to be in a good place where now if you're being tested you'll perhaps do reasonably well. And then there is a significant gap. 10th December को ये खुल जाएगा, 11th को खुल जाएगा.
तो फिर 19 दिसंबर को इसका डिस्कशन करेंगे. द आइडिया बिहाइंड दिस बीइंग, if you want to take more time in going through the material and understanding it and seeing it work in the real world, all of that you would have the time for. Additionally, जिन लोगों का snap है, nmat है, you have other priorities at that time, तो धीरे से कर सकते हैं. Anyway, we'll discuss the 8 sections. There are going to be 5 ZAT box released on every alternate day from 15th December onwards. And we will also have mock analysis classes for these. When I say mock analysis, in this, DM की बात करेंगे, QA की बात करेंगे. ZAT box are going to have DM section, quant section with video solution, DM section with video solution, and English section with textual solution. English का मतलब वीडियो नहीं रखते हैं. But this is all that is going to be covered within this. ये सब ऑन ऑफर है 5th Jan को. ये आई थिंक 7th Jan या 8th Jan को है जैट का ये जैट का एग्जाम का कंडक्ट. एज एंड व्हेन इट इज डन ये काम चल जाएगा. एंड प्राइसिंग, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. 4130. देर आर नो फर्दर डिस्काउंट कोड्स. कोई ये बताना कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ नीचे हो रहा है क्या? 4130 इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, यही है. एनरोलमेंट्स विल स्टॉप ऑन 15th December. 15 दिसंबर के बाद कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता है. आई हैव दिस, मतलब आई हैव अ फर्वेंट माइंडसेट कि भाई after the point that I think that I can no longer help you, I'm not going to take enrollments. लास्ट ईयर हमने, एवरी ईयर माय टारगेट इज पिछले 5 साल का डीएम क्लास में डिस्कस करें. सो लास्ट ईयर 2018 वाज इंक्लूडेड इन क्लास डिस्कशन. तो 2018 जैट का डीएम जो डिस्कशन का क्लास था, दैट इज प्रेजेंट इन द कोर्स as a demo of how the class conduct takes place. In case you are looking for that, you can go ahead. आप देख सकते हैं. Hopefully that helps you make better decisions about whether you should be joining or not joining the course. Those who join late will get access to the recordings, क्योंकि क्लास हमारी 29th से शुरू हो जाएगी. And the enrollments go on till 15th December. So in case you join late, you will get recordings of the classes that have already happened. Although I would highly recommend you attend classes live, क्योंकि डीएम के सेक्शन में होता क्या पता है, the way I perceive a problem or the way you perceive a problem is going to be tremendously difficult. So अगर उसी टाइम पे instantly resolve हो रहा है, the structure becomes stronger over time. अगर the doubts fester for a long period of time, quant में अगर थोड़े दिन रह भी गया सवाल तो दुख नहीं है, लेकिन डीएम में थोड़े दिन रह गया सवाल ना, because there is no unique answer being arrived at, तो लोगों को लगता है यार मेरा आइडिया तो सही है, मेरा आइडिया तो सही है. You falsely start believing your interpretation of things is correct, जो हर साल डीएम की आंसर की निकलने के बाद होता भी है. So pricing is this, the cutoff date for enrollment is this. 2018 DMK class present in the course for trial purposes is also there. बाकी देख लेना. That will be all for this video. Okay, bye people.